Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mityorma Amritagamaya. Om Shanti Shanti Shanti. O Lord, lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Om Peace, Peace, Peace. इस सभागार में उपस्थित भक्तजन, इस आश्रम में मेरे आने का सौभाग्य हुआ है. And indeed, I am very fortunate and blessed to be here today in this beautiful serene atmosphere of the ashrama. Today, subject of discussion is Swami Vivekananda and Sri Aurobindo. If you read the life history of Sri Aurobindo, you will find Aurobindo was very much influenced by Swami Vivekananda when he was practicing yoga. ये दो विभूतियों, the two spiritual luminaries, I pay my respectful homage. The two patriot yogis, spiritual luminaries of the 19th century. स्वामी जी विवेकानंद जी वो भी चाहते थे कि भारतवर्ष को आज़ादी मिले. इंडिया मस्ट गेट इंडिपेंडेंस. विदाउट इंडिपेंडेंस इंडिया कैनॉट राइज. भारत की उन्नति, भारत को आगे ले जाने के लिए भारतवर्ष की आज़ादी बहुत ही आवश्यक थी उस समय. Swami Vivekananda made prophecy that India will become Vishwaguru. India will become the world teacher. India will teach the whole world in different fields. इसलिए भारतवर्ष की आज़ादी की बहुत ही आवश्यक थी. ऋषि औरोबिंदो, all of you know that he was brought up in London, in the Western culture, Western behavior, everything. When he was in London, he used to feel inner urge to come back to India. And he had a premonition that great work is waiting for him in India. अंतरात्मा का जो कॉल उनके ही हुआ कि वो भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में उनके लिए बहुत बड़ा काम अपेक्षा कर रहा है. And he came back to India and he went round the whole India, not just as a tourist,
but to know about India very intimately, India's culture, India's civilization, the glory of India, particularly the past glory of India. उन्होंने ये सब देखा, समझा, और देखने और समझने के बाद उनको यही लगा कि भारतवर्ष को मुक्त होना चाहिए. In him there is a kind of nationalism. And dear friends, his nationalism was different from as usual nationalism. His nationalism was spiritual nationalism. आध्यात्म राष्ट्रवाद. Swami Vivekananda, nationalism was the spiritual nationalism. स्वामी जी बहुत बार कहे गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि अगर भारतवर्ष को अगर उठना है, आगे बढ़ना है, तो आध्यात्म से ही आगे जाना है. Very clearly he said, India will rise not with the help of matter, but India will rise with the help of spirit. And dear friends, spirit is nothing but the spirituality. अगर जब भारतवर्ष धर्म को भूल जाएगा, अध्यात्म को भूल जाएगा, then there is a death of India. इसलिए स्वामी जी चाहते थे, श्री अरविंदो चाहते थे कि आध्यात्म को कैसे हम हमारे दिन डे टू डे लाइफ में हम उसको कार्यान्वित कर सकते हैं, कार्यान्वित कर सकते हैं. स्वामी विवेकानंद हैज वेरी क्लियरली सेड, and Swami Sri Aurobindo was also of the same opinion, rather conviction. स्वामी जी कहते हैं, each soul is a potentially divine. और फिर कहते हैं, स्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं, what is the mission of Swami Vivekananda? He has put it in a few words. स्वामी जी खुद कहते हैं, my ideas can be put into few words. That is, to preach unto the mankind that divinity. हम जन समुदायों को यही कहना चाहेंगे, और यही मेरा जीवन का व्रत है, कि सब में डिविनिटी, दिव्यता अभिव्यक्त हो जाए. स्वामी जी कहते हैं कि सोल इज अ पोटेंशियल डिवाइन, and goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do it by work, worship, knowledge, by psychic control. You can do it, any one of them, or you can do it with the help of all these and be free. This is the idea of Swami Vivekananda. We talk about yoga. Nowadays, dear friends, yoga has come down to such a state. We feel ashamed of hearing all sorts of things. Yoga is not a physical exercise. When many young people, they go for yoga. When I was in Bombay, they were telling me, Swamiji, I asked them, where you are going?
we are going for yoga. I mean, where you are going for yoga? For gyms. Dear friends, yoga has nothing to do with physical exercise. Yes, it is needed if you want to practice yoga. But the physical exercise is not all of yoga. Yoga is very much connected intimately with the mind. That we have forgotten. And nowadays yoga means physical exercise. Yes, a physical exercise is needed for acquiring anything. That is why in scripture it said, Sariramadam kalu dharma sadhanam. Sariramadam. With a good physique, good health, you can achieve anything and everything. So physical exercise is needed, no doubt about it. But dear friends, actually, if you see the yoga, it is very much connected with our mind. That is why Yoga Patanjali Yoga Sutra is clearly written. Yogasya chitta vritti nirodha. First aphorism, Yoga aphorism, first verse of Patanjali Yoga. It is called chitta vritti nirodha. To control the modification of minds. All the time in our mind, there are a lot of modifications. If you see them in the lake, there are bubbles. And when mind becomes calm and quiet, there will be no bubbles, there will be no modification. That is why yoga, very simply if you say, just to mana nigraha, to control your mind. Control your mind. Now, Maharshi, our Rishi Aurobindo has said, supra-mental or super-mind. Dear friends, Swami, our Aurobindo was very much influenced by Swamiji, as I told earlier. He said to his disciple, many disciples, that when he was in Alipur jail, जब वो आलीपुर जेल में थे, because he was a prolific writer, बहुत स्ट्रांग राइटर थे, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वो बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखते, very fiery articles. That is why British government put him in the Alipur Central Jail in Calcutta. When he was in Alipur jail, he used to meditate very deeply. And in his meditation, Swami Vivekananda used to come. Swami Vivekananda ji, जब अरविंद ध्यान करते थे आलीपुर सेंट्रल जेल में, और स्वामी विवेकानंद इसके ध्यान में आते थे, और खुद अरविंद ने बताया कि हम जब क्या सुपर माइंड या सुपरामेंटल इसके बारे में समझ नहीं पाता था, स्वामी विवेकानंद इज टू टेल मी, एंड वो क्लेरिफाई कर दिए कि व्हाट इज सुपरा माइंड. स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही, श्री अरविंद जी बहुत ही स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रेरित थे. ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद. I'd like to tell you how he was influenced, how Aurobindo had a great regards for Guru of Swami Vivekananda, that is Ramakrishna Paramahamsa. I think it is not noted or recorded in the books. But this very interesting incident. Because when Aurobindo was in central jail in Alipur, then the sentry is to watch him very closely, and every day they used to see the Aurobindo is to take some पुड़िया जो कागज में लपेटा हुआ लेता निकालते थे और उसको सिर पे से बहुत देर तक रखते थे, फिर जगह में रख देते थे.
जो सेंट्री थे, सिपाही थे, उन्होंने समझा इसमें कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह है जो ऐसा कर रहा है, न जाने एक दिन ये सब जेल को उड़ा देगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा. Then one day, the sentry, the sipahi, they ask Aurobindo, what is this in this packet? Is there any explosion, anything? Explosive? Well, yes, there is explosive. What kind of explosive? Well, it is a Dakshineshwar, where Sri Ramakrishna did his extensive sadhana, his spiritual practices. Most of you have seen Dakshineshwara temple in West Bengal. बोले ये जो है, इसमें जो पुड़िया में जो है, ये दक्षिणेश्वर की मिट्टी है. The soil of Dakshineshwar. Yes, it is explosive. What kind of, not material explosive or anything, bomb. But it is a spiritual explosive. It is very important. अरविंद कहना चाहते हैं कि this spiritual explosion started from Dakshineshwar, where Sri Ramakrishna did intense spiritual practice. बहुत श्रद्धा करते थे श्री रामकृष्ण को, और उनको जो अनुभूति हुई थी श्री रामकृष्ण को, spiritual experiences. And Aurobindo was very much influenced by these spiritual experiences of Sri Ramakrishna. Not only that, you know the Sarada Devi, the spiritual consort of Sri Ramakrishna, both went to have blessings. Aurobindo and his wife Mrinalini Devi, both of them went to Bagbajar, Calcutta, where Sarada Devi is to live, and they went to Sarada Devi for their blessings. उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया माने? होली मदर ब्लेस्ड हिम. बाबा इन बंगाली, बाबा तुम्ही वीर संतान, you're a great son of India, वीर संतान. Because Holy Mother knew that Aurobindo, one day Aurobindo has to do is a heroic work. Veer Santan. And Aurobindo did. He did lot. Inspired the freedom fighters in those days, how they can make India free. Now people questions why Aurobindo was a freedom fighter, देशभक्त थे. And slowly Aurobindo gave up his involvement in politics, and he went to Pondicherry, all of you have seen, and he practiced intense spiritual sadhana, particularly yoga. Why? Because Swami Vivekananda and Sri Aurobindo strongly felt, as I said earlier, strongly felt that Renaissance doesn't mean only the material upliftment. You know the Renaissance. Renaissance doesn't mean only the material upliftment. Renaissance also includes the spiritual upliftment, spiritual revival, and India will rise. India will again become strong and dynamic with the help of material revival, Jagtik Unnati, mundane progress, and at the same time with the spiritual upliftment. In your scriptures, it is very beautifully mentioned. Try to understand it.
Abhudaya and Nishreyasa. Abhudaya means material welfare, and Nishreyasa means spiritual welfare. And in India, main characteristics is this. The India, our leaders, particularly the spiritual leaders, the Mudrishis, saints and seers, they practiced both. They went through the path of material welfare as well as spiritual welfare. And with the combination of two, India will rise and India will become, as Swami Vivekananda said, declared rather, that one day India will become Vishwaguru, India will become world teacher. Try to understand it. That is why Sri Aurobindo wanted that India should become free from British rule. At the same time, he strongly felt that there must be a spiritual revival. Nishreyasa. And the spiritual revival, how the people can become spiritual, there are many ways. If you want to become spiritual, sadhana. और साधना में करेंगे और कैसे सिद्धि लाभ करेंगे, कैसे आप सिद्धि लाभ करेंगे? There are three things in the yoga, component rather you can say. Sadhak, siddhi, the goal, and sadhana, in between two. There is a bridge. Try to understand. What is called sadhaka, sadhana and siddhi. Sadhana work as a bridge between the two, that is sadhaka and siddhi, the goal. As Swami Vivekananda, I said just now, that Swami Vivekananda said that each soul is potentially divine. And goal is to manifest this divinity within. Do it by controlling nature, external and internal. Do it by work, worship, knowledge, or by controlling psychic power, and be free. इसलिए योगा में जो थ्री कंपोनेंट है, साधक और सिद्धि, and in between the sadhana. And sadhana, generally if you see our Indian tradition, it is not tradition of 400 or 3 days, it is a tradition of 1,000 and 1,000 years ago. It is clearly explained about the sadhana, the practice, how will become spiritual, how you can control your mind, and how you can have bliss, peace, calmness of mind, which is very, very important. And there are 4 kinds of sadhana, all of you know very well. What are they? Karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, and Raja yoga. There are 4 kinds of yogas. And you can achieve siddhi, you can reach the goal by any one of the yoga, by Karma yoga, by Bhakti yoga, by Jnana yoga, by Raja yoga, और नहीं तो चारों योग के समन्वय से आप उस सिद्धि को लाभ कर सकते हैं, आप गोल पे पहुंच सकते हैं. Goal is the same. Goal cannot be many.
sadhana, practices, upay, maybe many, but the goal is the same. That is why this yoga is nothing but, all of you know that yoga is just to unite, union. परमात्मा से जीवात्मा और परमात्मा से कैसा हम जुड़ सकते हैं, कैसा जीवात्मा परमात्मा से जुड़ सकता है, लोअर सेल्फ कहिए, हायर सेल्फ कहिए, जो भी कहिए, जीव कहिए, परमात्मा कहिए, ये कैसे हम परमात्मा से मिल सकते हैं? हाउ विल बिकम वन विद गॉड, हाउ विल बिकम वन विद दिस सुपर कॉन्शसनेस, कैसे? वेरी सिंपल वे, अब तभी जुड़ सकते हैं, ये संभव है थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, थ्रू योगा. The Sri Aurobindo has put more emphasis on Raja Yoga, Hatha Yoga. And also he put emphasis as integral yoga. As I was just reading, also earlier also I have written, whatever I have understood. This integral yoga, Purna, Sampurna Yoga, Aurobindo's speciality. This integral yoga is nothing but the synthesis of four yogas, if I am correct. Because I was talking to Taradi and Vijayanji also, and Vivekji also, it is very difficult to understand the integral yoga of Sri Aurobindo. It will be tough, because you have to elevate your mind up to that standard, and then you can understand the supramental, all sorts of things. But this supramental, जैसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय, सुपर सेंसुअस हम कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं सुपर सेंसुअस. दिस spiritual knowledge, spiritual bliss, all sorts of things you can achieve not directly through the senses. That is called super sensuous, atindriya. This ordinary mind, you cannot realize God, or you cannot experience super consciousness, this ordinary mind. Then how we can do it? When mind becomes pure, then only you can achieve the experience of super consciousness. ये हमारे जो मन, सबका जो मन है, ये मन is not pure mind. There's so many things are there in the mind, modification, these, that. Only you can reach or you can experience super consciousness through pure mind. श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? शुद्ध मन से ही ईश्वर का दर्शन होता है. The pure mind. Our mind is not pure. So many desires are there, vasana, kamana, cravings. So many things are there in your mind. और पवित्र मन से ही यह संभव है. और पवित्र मन को हम कैसे पवित्र कर सकते हैं, कैसे मन को शांत कर सकते हैं? Our mind is very turbulent. Mind is very restless. All the time mind is, you are sitting here, I am sitting here, and you are thinking something somewhere. Mind is very restless. And in restless mind, with restless mind, you cannot achieve any spiritual experiences. Never. You cannot. So, it is called super mind, or it is called super sensuous. When mind becomes pure, then it becomes ati manasa. Ati manasa. Super sensuous. Sensuous means इंद्रियां, senses. With these senses, जो हमारे सेंस काम कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जैसे हम परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब चीज इंद्रियों से जो होता है. जो इंडिया जो है, माइंड बिकम प्योर
at the same time your senses also become pure. Senses are also turbulent, very restless. It is very clearly said in our scripture in Kathopanishad. Paranchikhani Bhatinat Sayambhu. What is that? Ki God has made the senses, the God has made the tendency of the senses. What is that? That is outgoing tendency. मन और इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर देखता है, भागता है, अंदर नहीं देखता है, बाहर देखता है. इंद्रियों सब कुछ जितने में कितना सेंसेस हैं, हाउ मेनी सेंसेस आर देयर? सेंसेस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. ये सब चीज हमें समझना, बेसिक चीजें. बड़े बड़े सब पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं. द बेसिक थिंग्स, द कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियस. विद स्टेन और इवन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से हम क्या करते हैं? हम चीज को परसीव करते हैं, चीज को देखते हैं, चीज को समझते हैं. लेकिन ये हमारे जो साधारण इंद्रिय, हम जो देखते हैं हमारे यहाँ साधारण लोगों में जो इंद्रियां काम करती है, दीज सेंसेस आर नॉट प्योर. द माइंड इज नॉट ट्यून्ड, सेंसेस आर नॉट ट्यून्ड. वो ट्यून करना पड़ता है. और जब मन ट्यून्ड हो जाता है, सेंसेस भी ट्यून्ड हो जाता है, तब फिर परमात्मा का दर्शन होता है. एंड यू कैन फील in other languages that is called higher consciousness, whatever it may be. इसलिए मन ही सब कुछ है. मन से ही हमें सब कुछ करना है. हम दुखी हैं, सुखी हैं, सब तो मन से ही होता है. सब मन से होता है. If you think, no, I am all right, yes, you are all right. Even no, I am not all right, I am not doing nothing, I am good for nothing, I am this and that, all the time, depression and all sorts of things. It's because of mind. इसलिए योगा, whatever Arvinda has said, Swami Vivekananda has said, or Patanjali Yoga Sutra, if you find, or Patanjali is the father of Indian yoga, सब उन्होंने कहा है कि मन को शांत करना है, मन को कंट्रोल करना है. और अति मानस, अति इंद्रिया, जैसे हम कहते हैं, दिस परसेप्शन, द स्पिरिचुअल परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, यह है अति इंद्रिया, बियॉन्ड इंद्रिया. तो आप कहेंगे बियॉन्ड इंद्रिया, तो फिर कैसे हम ये सब परसीव करेंगे? कैसे हम भगवान को जानेंगे, परमात्मा का दर्शन होगा? जब तब होगा, इसी मन से ही होगा, इसी इंद्रियों से ही होगा. व्हेन दे बिकम प्योर. प्योर का अर्थ क्या होता है? कि साबुन से धोना है? नहीं. प्योर का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड मीन्स योर माइंड मस्ट बी वेरी calm and quiet. There will not be unnecessary kamana, vasana, desires. Our mind is full of desires. Full of desires. All the time we are thinking, must acquire this thing, that thing, all the time. One desire is satisfied, another desire is coming up. So yoga, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको यही समझना चाहिए कि मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. अब बुरा न माने, बाजार में आप देखेंगे मन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया सामने आ गई है. many methods. And if you get admitted in some course within 5 months, 6 months, कंट्रोल माइंड तो छोड़िए, आपको समाधि भी लग जाएगी. All these are bogus, just to cheat the people. Whatever Sri Krishna has said, nobody can give better prescription than Bhagavan Krishna for having controlled mind. मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण जो गीता में बता के गए हैं, उससे ज्यादा कोई भी नहीं बता सकता है. जो भी बाबा जी, माता जी, बहुत सारे हैं, कोई भी नहीं बता सकता है. अर्जुन, ये वेरी परपेचुअल क्वेश्चन. इवन अर्जुन इज आस्किंग,
अर्जुन इज ग्रेट वॉरियर ऑफ हिज टाइम, ग्रेट आर्चर ऑफ हिज टाइम। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा योद्धा, वो भी पूछता है भगवान कृष्ण से। क्या पूछता है भगवान कृष्ण? भगवान से ही पूछता है कि मन तो बहुत अशांत है, माइंड इज वेरी टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस, माइंड इज वेरी टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस, चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म। पूछते हैं, जैसे हम लोग भी पूछते हैं, हम लोग के पास बोलते बाबा महाराज कैसे मन को कंट्रोल करेंगे? हम लोग देखो ये कोई शॉर्टकट और ये इंस्टेंट बाईपास प्रक्रिया नहीं है, इट टेक्स टाइम। एंड भगवान कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन, यस मन बहुत चंचल है, माइंड इज वेरी टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस। स्वामी विवेकानंद हैज सेड वेरी नाइसली, मन की जो चंचलता है ना, द रेस्टलेस ऑफ माइंड, हाउ यू कैन डिफाइन, हाउ एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। बंदर जानते हैं मन की इज ऑल टाइम रेस्टलेस, दिस दैट ऑल द टाइम रेस्टलेस। अगर बंदर को बिच्छू काट ले, स्कॉर्पियन बाइट्स द मंकी, एवं वो मंकी को अगर शराब पिलाया जाए तो मंकी की जो अवस्था होती है, मंकी बिकम सो रेस्टलेस, उतना ही रेस्टलेस हमारा मन है, उतना ही रेस्टलेस हमारा मन है। मन की गति भी बहुत तेज है। हमको जानना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड। फर्स्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग योगा यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड। और क्या है प्रश्न जानते? महाभारत की कथा है। अब बताइए तो महाभारत की कथा है कि ये प्रश्न करते हैं यक्षराज जी, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न करते हैं, व्हाट इज द फर्स्टेस्ट थिंग इन दिस ऑन दिस अर्थ। क्या बताया उन्होंने? बोलो कि सब ये तो है, स्पुटनिक है, साउंड है, लाइट है, उसकी भी वेलोसिटी है, गति है, लेकिन सबसे ज्यादा गति, वेलोसिटी, स्पीड किसका है? मन का है। आप यहीं बैठे हैं चुपचाप, भाई कहीं बैठे हैं, एक सेकंड भी नहीं, उससे फ्रैक्शन बहुत कम समय में मन आपको न्यूयॉर्क चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। जाता है कि नहीं बताइए? विदाउट एनी ये क्या नाम टाइम, नो टाइम, इट गोज, इट ट्रेवल्स। मन की ये गति है, मन की ये वेलोसिटी है, ये जो चंचलता मन की, कैसे हम निग्रह कर सकते हैं? अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से, एंड इट इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि कैसे मन को हम निग्रह कर सकते हैं, मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास है नुतकंते या वैराग्य चेन गिरियते, और कुछ नहीं। ये सब 2 महीने 3 महीने का कोर्स नहीं। जो कहते 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कोर्स करो, समाधि लग जाएगी, मन बैठ जाएगा, ऑल बोगस। भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास अनुतकुंते या वैराग्य चेन गिरियते। अभ्यास अनुतकुंते, कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करना है टिल डेथ। यू हैव टू प्रैक्टिस, अच्छा लगे ना लगे, निरंतर अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। अब ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, करना पड़ेगा निरंतर। इसलिए मैंने कहा, लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन करेंगे, 2 महीना करेंगे, बस सब कुछ हो जाएगा। नेवर। दैट इज व्हाई आई टोल्ड इन स्पिरिचुअल जर्नी, द स्पिरिचुअल साधना, देयर इज नो शॉर्टकट, नो बाईपास, नो इंस्टेंट कॉफी। इंस्टेंट कॉफी क्या है? बस सब कुछ मिला हुआ है, खाली ऐसा कर दो, खा लो, बस कॉफी हो गया। ये स्पिरिचुअल साधना ऐसी चीज नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम। हम लोग बहुत सारे भक्त आते हैं, आप बोलते महाराज ये नहीं, मन नहीं बैठता, ये नहीं। हम क्या रोजाना करते हैं? हाँ, 2 महीना तक किया, उसके बाद मन नहीं बैठा, छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट प्रैक्टिस का। और एक बात हम भूल जाते हैं, ये तो करते हैं कभी कभी प्रैक्टिस, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, बट अनदर पार्ट, व्हाट इज दैट? भगवान कृष्ण हैज टोल्ड
कि वैराग्य, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ वैराग्य? वैराग्य का मतलब मत सोचिए कि रिनंसिएशन, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, जंगल में गुफा में इधर में जाके चले जाएं, बाबा जी बन जाएं, हमारा जैसे कुछ हो जाए। नो, वैराग्य का अर्थ हमें अच्छा से समझ, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वैराग्य। वैराग्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो बहुत अच्छा, डिस्पैशन। पढ़िए किताब में, गीता में, डिस्पैशन। और भी हम सहज रूप से अगर आपको कहें, द मीनिंग ऑफ वैराग्य इज टू गिव अप द अटैचमेंट, आसक्ति, गिव अप ईगो, यही असल चीज है। गिव अप अटैचमेंट, गिव अप डिजायर, गिव अप योर ईगो। हाउ मच वी आर अटैच्ड, आवर माइंड इज अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स। परिवार में अटैच्ड है, समाज में अटैच्ड है, चीजों पर अटैच्ड है। विद आवर माइंड इज very much attached to many external objects, sensual objects. वो अटैचमेंट का त्याग करना ही त्याग है, वही उसका नाम ही है वैराग्य, डिस्पैशन। ईगो का भी त्याग करना है, अहंकार का त्याग। आप प्रश्न करेंगे, अगर ईगो का हम त्याग करेंगे तब बचेंगे कैसे? देयर इज नो ईगो इन मी, हाउ आई कैन सर्वाइव? यस, You can survive. इसलिए अटैचमेंट का त्याग करना और ईगो का त्याग करना है, वही है वैराग्य, वही है डिस्पैशन। बट दैट वी डोंट प्रैक्टिस। समटाइम्स वी प्रैक्टिस दिस, जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे, डिस्पैशन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब मन की प्रशांति नहीं आ सकती है, मन शांत नहीं हो सकता है, जितना भी आप कुछ कर लीजिए, जितने भी कुछ कर लीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हो, श्री राम कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, और हमारे अरविंद जी हो, जिन्होंने इतना योग पर, इतना खासकर राज योग पर इतना उन्होंने गहन चिंतन की है, बहुत ही डीपली। सब यही है मन। मन को हम कैसे काबू करें? अगर मन को काबू कर लिया तो सब कुछ हो गया। स्वामी जी हैज सेड वेरी नाइसली, स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट बोनाप नेपोलियन, ही कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड, ही वाज सो पावरफुल, लेकिन सब कुछ उन्होंने कॉन्कर कर लिया, लेकिन अपना मन को कॉन्कर नहीं कर सका है। जब मन को आप कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मास्टर ऑफ आवर माइंड, वी आर स्लेव टू आवर माइंड। हम मन के दास हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, जे भगवान कृष्ण जो भी हो, जो भी हमारे योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है। सही तरीके से, सहज तरीके से, ऐसा ही हमें समझना है, ऐसा ही हमें करना है, ऐसा ही हमें आगे बढ़ना है। टेक इट वेरी सिंपली एंड डू इट, प्रैक्टिस इट, एंड यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। इसलिए ऋषि अरविंदो, उन्होंने देखा कि अभी आगे अगर एनीबॉडी हैज टू बिकम द आइडियल सिटीजन, मैन ऑफ रियल सेंस, तब ये उनकी अंदर जो दिव्यता है, शक्ति है, उसको उजागर करना ही, विकसित करना है, टू मैनिफेस्ट। एंड मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? अरविंद जी ने राजयोग पर बहुत जोर दिया, उन्हें सब योगों पर जोर दिया, लेकिन राजयोग पर बहुत जोर दिया। और कैसे जोर देकर उन्होंने यही बताना चाहा, ही वांटेड टू टेल दैट ये राजयोग से, मन को काबू करने से, मन को कंट्रोल करने से ही क्या होगा? हमारे अंदर जो शक्ति है, दिव्यता है, वो दिव्यता
की अभिव्यक्ति हो सकती है, एंड इट विल मैनिफेस्ट. व्हेन डिविनिटी मैनिफेस्ट्स, योर होल पर्सनालिटी विल चेंज. अब जो है आप दूसरे हो जाएंगे. इसलिए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? क्या डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कि जो अगर हम कहें तो इट इज स्पिरिचुअलिटी इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर बीइंग. इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. तो जो भी हो, आप पढ़ते हैं जो राजयोग की किताबें, हठयोग की किताबें, कर्मयोग की किताबें, ये सब कुछ पढ़ते हैं, पढ़िए. और खासकर ऋषि अरविंद जो कह के गए हैं, राजयोग पर हठयोग पर जोर दे के कहे गए, सुप्रामेंटल के बारे में कह के गए हैं, उनका चित्र से पढ़िए और यही पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने कहा है. आवर स्पिरिचुअल लीडर्स, saints and seers have been practicing this yoga for thousands and thousands years, and उनको यही निष्कर्ष निकला है. The conclusion is that yoga, whatever do, karma yoga, jnana yoga, raja yoga, the concentration of mind is needed. Without concentration of mind, you cannot do karma yoga or bhakti yoga also. So today, up to this much, I am very much thankful to the authority of this ashrama, Aurobindo Ashrama. They have kindly invited me to speak few words, share my thoughts, simple thoughts, not very complicated. Simple, I am very much delighted to share my simple thoughts about yoga and all sorts of things with you. So thank you very much. Namaskar. If you have any question, you may raise question. I'll try my best to answer your question. बताइए. क्या तुम क्या समझा बता? Do you understand Bengali or Hindi or English? Oh, you can speak in Hindi also. बता क्या समझा, क्या सुना. और तुम यहाँ आते हो तो क्या 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 है, चर्चा हो रही बहुत. अब और भी सुनते हैं, अब हमें रोजाना सुनते हैं, आते हैं योगा के बारे में, इसके बारे में. इफ यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको क्या लगा बताओ. You are trying to understand it. How much you have understood? Don't get frightened or don't get nervous. It is just very informal way of asking or giving answer. Do you want to become spiritual? क्यों स्पिरिचुअल होना चाहता है? बहुत लोग हैं, हजारों करोड़ों करोड़ लोग सारे दुनिया में है. दे डोंट बॉदर अबाउट स्पिरिचुअलिटी. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. कुछ भी नहीं जानता है. बट देयर आर सम पीपल, दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, दे आर इंटरेस्टेड इन योगा. क्यों व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड? दिल्ली में तो कितने करोड़ आदमी हैं, यहाँ कितने आदमी आए हैं सुनने के लिए, जो भी आते हैं जाते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड. रेस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड. वाई यू आर इंटरेस्टेड? क्यों स्पिरिचुअल बनना चाहते हो? कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, योगा के बारे में क्यों सुनते हो, वह सुनना चाहते हो? क्यों? मैं बता देता हूँ, आप शायद जानते होंगे, एक्सप्रेशन नहीं करते. ये स्पिरिचुअल हम बनना यही चाहते हैं, देश विदेश के लोग चाहते हैं. द पीपल वांट स्पिरिचुअलिटी, दे वांट टू बिकम स्पिरिचुअल. उसका एक ही कारण है, टू हैव पीस, मेंटल पीस. मन की शांति के लिए कर सकते हैं. विदेशों में
In the foreign countries, the Western countries, so affluent. All amenities of life are there, available, easily available. But people are not happy, people are not at peace. That is why they are interested in spirituality. Nowadays, really they are interested in spirituality. They are interested in yoga because they do not have peace. Paisa bahut hai, all amenities of life, everything is there, but there is no mental peace. And dear friends, it is verified and verifiable that mental peace cannot come from external objects. It is verified. The peace comes from within. बाहरी चीज़ों से शांति नहीं मिलती है, इसलिए मिलता होता तो कोई भी स्पिरिचुअल नहीं होता, कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं होता. समझ गया? एनी क्वेश्चन? नाउ आई हैव टू लीव. यस. Yes. I have a very material and social question. Spirituality, what you talk is, yes, that is a fact of life. We have to understand. Yeah. I have been associated in various. My direct question is: we have so many schools like yoga and Raj Yoga. It's all acceptable. Yeah. Absolutely acceptable. Definitely. We have now the material question, social question. Yeah. Not the spiritual part. Yeah. Spirituality, yes, there are many ways to go there. In India and abroad also, we have spotless Indian, I'll not call religious, spiritual organizations which are spotless for more than 100 years. We know that. I need not name them. Why? And there is no conflict among themselves. There is a variation. Somebody likes that, somebody likes that. It is a part of the human nature. Why is socially, not the propaganda part, why don't we unify all of them together? That is my, like from the age of 20, I have been going to your mission. I am coming here. There are many people of this nature. I am saying there is no conflict. Why don't we, I will not say socially unite, but purpose is same. And so much variety that it doesn't baffle me, but there is a question, why can't we unite? Yeah. You see, if you see the Indian culture, Indian civilization, and the characteristics of Indian culture and civilization is, if you see the Indian culture, the history of Indian culture, that unity in variety. विविधता में एकता, जिसका हिंदी में कहते हैं, यूनिटी इन वैरायटी. Variation will be there, differences will be there, but in spite of all, there is a unity. There is a unity. Take the example socially. In India, as a peculiar country, peculiar I should not say, it is a beautiful country. Here you will find lot of variation, multilingual, multi-religious, multiple tastes, multiple habits, good habits. कितने मजहब के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं भारतवर्ष में. कभी कभी गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं होता है. In spite of all this, we are living peacefully. To some extent, we are living peacefully. और ये जो आप कहते हैं कि वेरिएशन नहीं रहेगा, सब एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. Your tastes are different, temperaments are different. Your taste, my taste is different. कभी भी एक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं एक हो सकता है. Your taste is different, my taste, my temperament different. Your taste is temperament is different. कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है. Different tastes are there, and there should be taste. There should be variation. It's the beauty of the nature. There should be variation. हाँ, हमको अच्छा लगता है, मानते हैं शिव को. हमको अरविंदो का फिलोसफी अच्छा लगता है, ठीक है.
हमको श्री रामकृष्ण विवेकानंद का फिलोसॉफी दर्शन अच्छा लगता है, वेल एंड गुड। लेकिन कल क्या होता है, आप अरविंदो को फिलोसॉफी को मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, बात है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का फिलोसॉफी गलत है, घटिया है। दैट यू शुड नॉट थिंक। जब ये सोचते हैं तभी तो गड़बड़ हो जाता है, तभी तो समस्याएं आ जाती है। यस, वो भी ठीक है, हमारे अरविंद फिलोसॉफी भी ठीक है, उनका फिलोसॉफी भी ठीक है, लेकिन अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। यही तो श्री रामकृष्ण का तो मैसेज तो यही था, दैट देयर वाज अ वंडरफुल मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण, कि दूसरे धर्म भी ठीक है, हमारा धर्म भी ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन हम दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का, दूसरे का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हम निंदा, अश्रद्धा नहीं कर सकते। वी कैन डिसरेस्पेक्ट। और सब यूनाइटेड का यही हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो टेस्ट है, टेम्परामेंट है, हमारे जो साधन पद्धतियां हैं, there are many ways. That is why our scripture has said very nicely, ekam sat vipra bahuda vadanti. The truth is one. Truth cannot be many. Truth is one. Sages call it by different names. सत्य एक ही है, उसको हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने समय के अनुसार उन्होंने डिफरेंट वेज से उनका वर्णन किया, एक्सप्लेन किया। बस दिस मच। वैसा यूनिटी तो है, यूनिटी जरूर चाहना चाहिए। आप जैसे कहते हैं सोशली भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि सबको ये फॉलो करे और कुछ नहीं फॉलो करे, उससे यूनिटी आएगी, नहीं आ सकती। यूनिटी तो रहे, वेरिएशन तो रहेगी। आपका खाने पीने का टेस्ट, हमारा खाने पीने का टेस्ट अलग है। आप साउथ से हैं, उनका रहन सहन, उसका लाइफ स्टाइल, उसका खाना अलग है, हमारा नॉर्थ इंडिया का अलग है, बंगाल का अलग है। मछली चाहिए सब अरे चलो तो बताइए, टेस्ट डिफरेंट है, ये संभार रसम चाहिए। यही तो बहादुरी है कि वेरिएशन में रहकर कैसे हम यूनिटी ला सकते हैं, यही तो असल बात है। विवेक तुम बोलो, तुम तो जानता है। এই মনোচলো নিজে নিকতা নেই, এই গান ইয়ার বেঙ্গলি, এই গানটা কি করে তুমি কি একটা অন্যরকমভাবে গাইলে, যে কি সংস্কৃত করেছো নাকি? সংস্কৃত করেছো? ও দিস মনোচলো নিকেতন জাস্ট নাও she sang. It is very beautiful song and very important song. क्यों important मैं कहना चाहता हूँ, when Sri Ramakrishna was invited to somebody's house in Calcutta, and Sri Ramakrishna said, "Acha, anybody is here who can sing beautiful song?" Then family members were searching, who can sing, and you have to sing before Sri Ramakrishna. So what they did? Oh, Narendranath, earlier name Nanda, when Narendranath was young, he used to live in that Simla area, Then family member asked, "Oh, why don't you invite or call Narendranath? He's a beautiful singer, wonderful singer." And they brought Narendranath and they requested Narendranath to sing before Sri Ramakrishna, his would-be guru. And this song, as he just now sang, Mano Chalo Nije Nikodala. The meaning and the exact meaning and the main meaning of this song is very beautiful. Because the mind, where you are going, why you are wandering here and there, come to your place, come to your abode. Unnecessarily your mind is calling the mind, telling the mind, why do you go here and there? Why you are so restless? Why you are so turbulent? Come to your place, your own place, and be calm and quiet. It is the meaning, exact meaning. And hearing this song, Sri Ramakrishna went into Samadhi. It's such a beautiful song. Went into Samadhi. And the first meeting, Narendranath and Sri Ramakrishna, the first meeting. Anyway. Sir, I have one question. Yes. Sir, is Brahman and consciousness same?
You see, as I told, the truth is one. Whether you call it by different names, whether you call it Brahman, whether you call it Atman, whether you call super consciousness, whether you call it pure consciousness, same. Different name they have given it, but it's the same. Nature of all these things is the same and one, same and one and same. They are not different. Those who have perceived, who has realized all these things, they have given different names, but Brahman, Atman, consciousness, pure consciousness, super consciousness, more or less same. Different names are there.